अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन और आप देख रहे हैं मिस्टर AH। दोस्तों, आज हम ऐसी वीडियो पे रिएक्ट करेंगे जिसका टाइटल सुन के शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। इसका टाइटल है द कंट्री विद मुस्लिम्स बट नो मॉस्क, यानी ऐसी कंट्री जहाँ पर मुसलमान तो रहते हैं लेकिन एक मस्जिद भी वहाँ पर नहीं है या बनाई नहीं गई। तो लेट अस रिएक्ट टू दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बेल आइकन को दबाना ना को बोलो, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालता हूँ आप लोगों को जल्द से जल्द नोटिफाई हो जाए। तो लेट अस सी द रिएक्शन नाउ। बिस्मिल्लाह। This is the country with Muslims but no mosques whatsoever. With a mere population of roughly 5,000, Muslims in Slovakia are a minority. The fact that there is not a single mosque in the country and no Islamic teachings in any school makes one wonder how difficult it is for Muslims to live in Slovakia. In this video, we will be taking a dig into exactly that. Firstly, to be clear, the origin of the Muslims in Slovakia traces back to the time of Turks and Ugar in the 17th century. So Slovakia did have mosques from the Ottoman period back in the day. However, with only a handful of Muslims in the state, the mosques fell to no use, resulting in their demolishing. In 2000, a proposal was presented by the Waqf Foundation to build an Islamic center in Bratislava, the capital of the country. Nevertheless, the mayor of the city rejected their proposal. Anyway, if we talk about the political elite in charge of Slovakia, they have effectively passed several legislatures since 2016, which have prevented Islam from gaining the recognition of a state religion. In 2016, the ruling party, Slovak National Party, SNS, proposed an alteration in the existing law that required religious groups in the country to have 50,000 followers to run their schools, open religious establishments, or qualify for government subsidies. The law previously required only 20,000 followers. According to official sources, this legislation was mainly to target Muslims. As suspected, 2/3 deputies, including opposition ones, voted in favor of the legislation and it became a law in 2017. Moreover, the data collected from the most recent census shows that the religious groups that fall under the required population threshold are the Roman Catholic Church, the Protestant Evangelical Church of the Augsburg Confession, the Greek Catholic Church, the Christian Reformed Church, and the Orthodox Church. No mention of Muslims or Islam here as well. In the very same year as the passing of this law, the then Prime Minister Robert Fico made a statement in which he clearly said that Islam had no place in Slovakia and that he wished that there weren't tens of thousands of Muslims. Moving on 30th November 2016, another law was passed which blocked Islam from gaining official status as a religion in the country. Even before 2016, during the peak of the migrant crisis in 2015, Slovakia took in 200 Christians, but refused entry to any Muslim refugee. On this biased behavior, the Interior Minister remarked, "We want to help Europe with the migration issue. We could take 800 Muslims, but we don't have any mosques in Slovakia. So how can Muslims be integrated if they're not going to like it here?" Other Slovakian politicians have also been vocal about their point of view of Islam from time to time. For instance, in 2016, the SNS chairman, Andrej Danko, strongly expressed his opposition to Islamization by saying that it begins with a kebab, but can turn into something really dangerous in the next 5 or 10 years. He also reiterated the government's commitment to ensuring that no mosque will be built in future Slovakia. So who is this Andrej Danko? He has been the Speaker of the National Council of the Slovak Republic from 2016 to 2020. He held his position for 4 years, and during the elections of 2020, he sank to the complete bottom with his little political party. As he was far from being elected, he left politics because people didn't like him. The internet is full of memes making fun of him and his speeches. These speeches have been representing Slovakia in the foreign media for the last few years, and still are. Eventually, they were kicked out by the Slovak people having enough of them. Well, that was how the political leadership of Slovakia has treated Islam in the recent times. But what about the Muslim inhabitants of the country? How oppressed do they really feel? Let's find out. According to a 42-year-old Syrian translator, she moved to Slovakia back when she was 19.
She founded an Islamic foundation and got married to a Slovak. Today she proudly calls herself a Slovak too. Another Slovak Muslim, a born Afghan, is living in Slovakia since the 90s. He has been helping foreigners to adapt to Slovakian life for quite some time now, and he is awed by how Slovakia has progressed so fast in a relatively short period of time. He says that most of the foreign Muslims in Slovakia come to study medicine and later work as doctors and get married to Slovakian women. He further says that as a Muslim, he has never faced any kind of discrimination and that there are prayer houses everywhere, including Bratislava, Martin, Nitra, Luchinec, and Košice, with everything needed inside. So the fact that mosques are not allowed to be built in the country doesn't bother him, nor should it bother any other Muslim. Despite the testimonials and the fact that the politicians mentioned in this video are far gone from mainstream politics of the country, it can't be denied that the atmosphere they created still persists in Slovakia. Muslims still are far from being given equal rights or recognized as one of the religious factions of the country. They can't have religious leaders, nor can they carry out Muslim marriages similar to civil ones. Also, with no official mosques, the Muslim community in Slovakia has no option but to meet and hold their prayers in rental houses or temporary prayer rooms, something that has much greater symbolism than practical implication. The fact that the country's Muslim population is so tiny shows that the issue may not actually be a real issue, but merely a politically motivated agenda where a minority is scapegoated for problems that don't exist. बेसिकली ये पूरा पॉलिटिकल गेम है. अ कंट्री नोन एज स्लोवाकिया, जिसमें 5000 मुसलमान रहते और उसमें एक मस्जिद भी नहीं है, नॉट इवन इन द कैपिटल सिटी. 2016 में थोड़े लॉज निकले थे, उससे पहले भी थोड़े लॉज निकले थे कहते कि दे शुड बी मिनिमम 50,000 पीपल ऑफ द सेम रिलीजन टू डू स्टफ लाइक बिल्डिंग मॉस्क या के जो भी रिचुअल्स है वो फॉलो करना है, ऑल दैट स्टफ. यहाँ पे 5000 है और उससे पहले 20,000 थे. तो लोग जो नमाज़ पढ़ते वहाँ पे वो लोग रेंटल हाउसेस या घरों में बुला लेके जमात बना लेते अपनी अपनी, वैसा पढ़ते, विच इज़ वेरी सैड टू हियर. क्योंकि बोल तो मस्जिद अल्लाह का घर है और वो जहाँ पर नहीं है वो बहुत बड़ी बहुत दुख की बात है कि उधर एक भी मस्जिद नहीं है, अज़ान नहीं होती उधर. तो इट्स पूरा पॉलिटिकल गेम है और ना होना बोल के वो लॉज बनाए ताकि मुसलमान स्पेशली ऑप्रेस होना बोल के. बट अल्लाह की कुदरत देखो, कोई भी लोगों को नमाज़ पढ़ने से रोक नहीं सकते. वो घरों में जमात बना के पढ़ लेते. इंशाल्लाह अल्लाह ताला लोगों को उतना ही सवाब देगा जितना मस्जिदों में पढ़ता. और एक चीज़ यहाँ पे भी है कि अपने कुछ चीज़ें मिल जाते जल्द से जल्द, अपने कुछ चीज़ें इजीली अवेलेबल है. जैसे कि अपन मस्जिद को जाते, रोज़े रहते, रमज़ान अपना सुकून से गुज़रता. देयर आर मैनी अदर थिंग्स जो अपने को छोटे छोटे दिखते बट अपन उसकी कदर नहीं करते. जैसे कि मस्जिद को जाना एक बहुत बड़ा सवाब है. देयर आर मैनी हदीस रिलेटेड टू द मॉस्क के मस्जिद में पढ़ने का सवाब बहुत है, ऐसा वैसा. तो अब वो जिस पे गुज़रती बोलते नहीं उसको मालूम, जिसको इजीली अवेलेबल है उसको उस चीज़ की कदर नहीं रहती. तो वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह कि अल्लाह ताला अपने को मस्जिदों में बुलाता, अपनी इबादत अपने घर में बुलाता, अपने को इबादत कराता, अपने स्पेशल प्लेस, एक प्योरीफाइड प्लेस में जहाँ पे जहाँ पे फुल लिटरली इट्स वेरी पीसफुल. एंड और कोई एक दूसरे को ऐसा नहीं रहता कि चलो भाई तुम अमीर है तुम फर्स्ट सफ़ में खड़ना, तुम गरीब है तुम सेकेंड लाइन में खड़ना, तुम थर्ड लाइन में. नहीं, जो जिधर आके बैठा, अगर गरीब आके फर्स्ट लाइन में बैठा तो ने बैठ गया भाई, उसकी हो गया. अब तुम उसको पीछे हटो नहीं बोल सकते. तो दिस इज़ इस्लाम के इक्वालिटी सबको वो रखती. एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर अल्लाह. तुम कितने भी बड़े शेख होंगे, तुम कितने भी बड़े प्रिंस होंगे, कुछ भी होंगे, अल्लाह के घर में देयर इज़ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तुम ऐसे है तुम वैसे नहीं. उन्हें आके बैठ गया हिस्सा ख़त्म. तो दिस इज़ व्हाट इस्लाम टीचेस अस के एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर अल्लाह. इट डजंट टीच यू अबाउट द थिंग्स विच सोशल मीडिया शो अप. और इधर भी पूरा पॉलिटिकल गेम है वो इस्लाम को ऑप्रेस करने. मगर इट्स वेरी सैड कि उधर एक भी मस्जिद नहीं बनी और दे मेनी पीपल माइग्रेट देयर टू स्टडी और वो लोग वहाँ के औरतों से शादी करते. देयर आर मेनी थिंग्स एंड दे आर
happy, they are they are proud to call themselves Slovakian, जो भी है, मैं प्रोनाउंस गलत करूँ तो राइट। तो वही बी थैंकफुल टू अल्लाह के अपने को हर चीज़ आसानी से मिल जा रही। मस्जिद अपने हाथों में से छिन जाना या मस्जिद की नेमत से अपन गाफिल हो जाना इज़ ऑल्सो वेरी बिग थिंग। डॉक्यूमेंट्री ऑन जमजम वीडियो भी मैं डाला इससे पहले, अगर आप लोगों ने देखे तो देख लो इधर क्लिक करके। और एक वीडियो डाला जिन शाउटिंग इन नमाज, जिन के ऊपर है जो नमाज में पुकार ले रहा, जो भी है इधर डाल देता हूँ इंशाल्लाह। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहती है, आप उधर भी जाके क्लिक करके देख सकते। आप लोगों को कैसी दिखी वीडियो कमेंट डाउन बिलो। और आप लोगों को अगर कोई वीडियो पे रिएक्शन होना है मेरे से तो आप लोग कमेंट में इंशाल्लाह लिंक छोड़ दो या बोलो या उसका टाइटल डाल दो, इंशाल्लाह विल ट्राई माई बेस्ट टू रिएक्ट ऑन इट। दैट्स इट आज के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकन को दबाना ना को बोलो टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम मिस्टर AH। और दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन लोगों को भी नॉलेज हो और उन लोगों को भी के मालूम हो कि मस्जिद की नेमत कितनी बड़ी नेमत है। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Mm-hmm.